Hello everyone. Today we'll be talking about polynomials. Polynomials often look confusing at first, but once the basic idea is clear, they become very simple. In this video, we'll slowly understand what a polynomial is using easy examples. By the end of this video, you should feel comfortable with the basics. Let's begin with what all we are going to talk about. We will be talking about algebraic expression, then terms, then coefficients, then classification of polynomials on the basis of number of terms. Then we will talk about degree of polynomials and then their classification on the basis of degree. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे algebraic expressions से. तो algebraic expressions क्या है? हिंदी में बीजीय व्यंजक भी कहते हैं. तो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा है जब हम एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को कंबाइन करते हैं तो algebraic expressions बनते हैं. Like these are some of the examples of algebraic expressions. Let us take the first expression x plus 3. Here the variable x has been combined with 3 to form this expression. Similarly, in these three expressions also, variables and constants have been combined in different ways to form these expressions. Now, in the expression x plus 3, x and 3 are called as the terms of this expression. So, x and 3 are the terms of this expression. Similarly, 2y and minus 5 are the terms of this expression. And this expression has got only one term, 3x square. And this expression has got two terms, 4xy and 7. Here we have to keep one thing in mind that किसी टर्म के पहले अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो उस टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. Now let us take example of another expression minus x cube plus 4x square plus 7x minus 2. So how many terms are there? There are 4 terms in this expression. So first term is minus x cube, second term is 4x square, third term is 7x and fourth term is minus 2. Now let us consider 2x plus 3x. Can we say that this expression has got two terms? No. Here 2x and 3x are like terms. इन दोनों को हम ऐड करके 5x लिख सकते हैं. So it has got only one term. एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे x plus y square. So अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो ये हो जाता है x square plus y square plus 2xy. So इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं. Another example, say 2x in the bracket 4x plus 3. So if we solve this, if we open the bracket, we can write it as 8x square plus 6x. So in these cases, we see that the terms of the expression are exactly not as they look like in the original form. तो हमें exact number of terms को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर एक्सप्रेशन सॉल्व हो सकता है या सिंपल फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स उसके डिसाइड करेंगे. एंड हाउ द टर्म्स आर फॉर्म? टर्म्स फॉर्म हो रहे हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके. सपोज हम इस टर्म को लेते हैं 8x स्क्वायर. 8x स्क्वायर कैसे फॉर्म हुआ है? 8 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x. सिमिलरली 6x कैसे फॉर्म हुआ है? 6 multiplied by x. And when these two terms are added, then we get this expression 8x square plus 6x. So always remember, terms are added to form an expression. Terms are added to form expression. To form expression. और टर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं? या तो हम कांस्टेंट या वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें. या हमने मल्टीप्लिकेशन का केस देखा है
Now let us take another expression, say x plus 1 by x. ये 1 by x भी इस एक्सप्रेशन का एक टर्म है which has been found by dividing 1 by x. So टर्म्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं? कांस्टेंट या वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके या उसको डिवाइड करके, और दो या दो से अधिक टर्म को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक्सप्रेशन मिलते हैं. एक्सप्रेशन के सिंगल टर्म्स भी हो सकते हैं, लाइक दिस इज ऑल्सो एन expression. Now, each term of an expression has a coefficient. Like, for example, हम इस एक्सप्रेशन को लेते हैं. जितने भी टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, इन सभी टर्म्स के एक एक कोएफिशिएंट होते हैं. लाइक फर्स्ट टर्म माइनस एक्स क्यूब में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू -1. सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 4. थर्ड टर्म 7x में x का कोएफिशिएंट क्या है? 7. And -2 is the coefficient of x to the power 0 because x to the power 0 is equal to 1. Now let us talk about polynomials. So polynomials क्या है? So polynomials are special kind of algebraic expression. So ये special kinds क्या है? What is that speciality which make the expressions polynomials? उसको कुछ examples से हम लोग देखते हैं यहाँ पे. So यहाँ पे कुछ expressions हमारे पास हैं. यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो terms है expressions के, उसके powers को देखते हैं. Here जो first term है उसमें x का power 2 है, second term में x का power 1 है. In this expression p का power 1 है, यहाँ x का power 3 है, यहाँ x का power 2 है, यहाँ x का power 1 है. 7 can be written as 7 into x to the power 0. तो यहाँ हम देखते हैं कि x का जो पावर है सभी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स का पावर है वो एक होल नंबर है. नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन. हियर सी, इसके सेकंड टर्म में जो x का पावर है दैट इज x टू द पावर -1. 1 by x कैन बी रिटन एज x टू द पावर -1. हियर इस एक्सप्रेशन के सेकंड टर्म में y का पावर इज अ फ्रैक्शन. इन दिस एक्सप्रेशन इन द थर्ड टर्म p का पावर क्या है? एक फ्रैक्शन है, और यहाँ पे x का पावर अगेन एक नेगेटिव इंटीजर है. तो हियर वी सी दैट द powers of the variable in one or more terms is not a whole number. Not a whole number. So the first category of expression जहां पे वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है, they are called a polynomial. Right? So polynomials का उसको डिफाइन कैसे करेंगे? Where the exponents or the power of the variables are whole numbers, such expressions are called polynomials. और जहां पे किसी भी एक टर्म में अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं होता है तो दो दे विल बी कैटेगराइज्ड एज एन एक्सप्रेशन बट दे विल नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ पॉलिनोमियल. नाउ लेट अस सी हाउ वी डिनोट अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को डिनोट करने के डिफरेंट वेज क्या है? सो अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि वेरिएबल x में है, सो उसको हम px से डिनोट कर सकते हैं. Here qx represents a polynomial in variable x. Similarly, ry represents a polynomial in variable y. Similarly, if I write su is equal to 2 minus u square plus 6u cube. That means su represents a polynomial in variable u. So these are the ways in which a polynomial can be represented. So terms के basis पे भी polynomials को classify कर सकते हैं. Suppose कुछ polynomials का examples लेते हैं. 2x 2 5x cube minus 5x square y. Now इन सारे polynomials में common क्या है? So सारे polynomials में there is only one term. So polynomials जिसमें सिर्फ एक terms होते हैं उनको हम monomial कहते हैं. Now let us take some more polynomials like px is equal to x plus 1.
qx is equal to x square minus x. ry is equal to y to the power 4 plus 1. So here we see that all the polynomials have two terms, total two terms. So such polynomials are called binomials. Polynomials जिसमें दो terms होते हैं उसको हम binomials कहते हैं. Now let us take px is equal to x plus x square plus say pi. Qx is equal to root 2 plus x minus x square. So both these polynomials have three terms in them. So such polynomials are called as trinomials. So like this we can classify polynomials on the basis of number of terms also. So single terms वाले polynomials को हम monomial कहते हैं. Polynomial जिसमें दो terms होते हैं उसको binomial कहते हैं और जिसमें three terms होते हैं उसको trinomials कहते हैं. So now let us come to degree of a polynomial. So what is degree of a polynomial? So इसको हम लोग कुछ example से समझते हैं. So let us take an example. Px is a polynomial in variable x and qy is a polynomial in variable y. यहाँ पे हम जो variable x है उसका highest power को देखते हैं. What is the highest power of the variable in this polynomial? That is 7. This is the term with the highest power and यहाँ पे जो variable x है उसका power क्या है? 7 है. Now in this polynomial the power of y is highest power of y is 6. So किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर को उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं. सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 7 और इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 6. सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जैसे x रेज टू द पावर 5 माइनस x रेज टू द पावर 4 प्लस 3. तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 5. सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 5. Now take another example. 2 minus y square minus y cube plus 2y raised to the power 8. So here the highest power of y is 8. The degree of this polynomial is 8. Let us take another polynomial, say 2. So 2 एक polynomial है क्या सबसे पहले? Yes, 2 is a polynomial. How? 2 can be written as 2 into x to the power 0 because x to the power 0 is 1. So here what is the highest power of variable? Is 0. So the degree of this polynomial is 0. And such type of polynomials is called a constant polynomial. So all the numbers are in fact examples of constant polynomials. So what is 0? 0 is also a constant polynomial, but it is called a zero polynomial. So what can be the degree of a zero polynomial? So zero polynomial की degree क्या हो सकती है? तो zero को हम लिख सकते हैं 0 into x to the power 0, 0 x to the power 1, 0 into x to the power 2. कुछ भी लिखे इसकी वैल्यू तो सबकी वैल्यू तो 0 ही है. So can we define the degree of a zero polynomial? No. So the degree of a zero polynomial is not defined. Now let us see how we classify polynomials on the basis of degree. We have already seen how polynomials are classified on the basis of number of terms. So here let us take some examples. So we have got three polynomials here. So we observe that in all the three cases, the degree of the polynomials is 1. The highest power of variables in all the three cases is 1. So degree of all the three polynomials is 1. So such polynomials are called as linear polynomials. And the maximum number of terms in a linear polynomials can be 2 only. Let us move ahead. We have got another group of polynomials.
So here we see the highest power of the variable in all the three cases is 2. So the degree of all the three polynomials here is 2. Such polynomials are called as quadratic polynomials. And the maximum number of terms in a quadratic polynomial can be 3 only. Let us move ahead. So here in all the three cases, we see the highest power of the variable in all the three cases is 3. So the degree here is 3. So a polynomial with a degree 3 is called a cubic polynomial. And the maximum number of terms in a cubic polynomial can be 4 only. Let's pause here and quickly revise. Today, we understood what a polynomial is and how to identify its terms, their coefficients, degree of a polynomial, and their classification. This foundation is very important. In the next part, we'll use this understanding to solve a few problems and then move ahead with zeros of a polynomial and remainder theorem. If this part felt manageable, the next one will feel even easier. If you have any doubts in any topics discussed today, feel free to mention them in the comment section. I'll be happy to clarify them. Take a short break. My name is Amit and I'll see you in part 2. Thank you for watching.